हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद रुचि। तो ये वो वीडियो है जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है और सब लोग उसके लिए कोई कंपटीशन सक्सेस खरीदता है, कोई प्रतियोगिता दर्पण खरीदता है। तो पढ़ने से बेटर है अगर आप वीडियो में देखेंगे और सुनेंगे तो आपको ज़्यादा ही याद रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले और ताज़ा खबर बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे उन लोगों की भी हेल्प होगी जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है। और प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश विदेश की ताज़ा घटनाओं के साथ देखते हैं कब कहाँ कैसे क्या हुआ। तो question number 1, name the person who heads the 8-member panel constituted by Government of India which proposed an institutional framework for valuers by setting up National Institutes of Valuers NIV. Option is Tapan Roy, Usha Thorat, MS Sahu, AS Mehta, Amitabh Kant. And the right answer is MS Sahu. The government appointed 8-member committee of experts headed by IBBI. IBBI क्या है? Insolvency and Bankruptcy Board of India. Chairperson MS Sahu has submitted a report on valuation professionals and proposed an institutional framework for valuers by setting up National Institute of Valuers. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टोर्स फॉर एसेंशियल कमोडिटीज़ विच वॉज सेट बाय गवर्नमेंट अंडर PPP मॉडल ड्यूरिंग लॉकडाउन। एसेंशियल कमोडिटीज़, उस स्टोर का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टोर जहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जो कि लॉकडाउन के ड्यूरिंग गवर्नमेंट ने लगाया है। दीदी स्टोर्स, जैन स्टोर्स, दीदी स्टोर, जन स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर्स, आम आदमी स्टोर्स या सुरक्षा स्टोर्स। तो आपको इसका आंसर क्या लग रहा है? ऑब्वियस है, कोविड-19 से सभी को सुरक्षित रखना है, तो इसका नाम है सुरक्षा स्टोर्स। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डेली एसेंशियल्स टू इंडियन सिटीजन्स ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, द गवर्नमेंट विल सेट अप 20 लाख रिटेल शॉप थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP, Public Private Partnership, namely Suraksha stores across India in the next 45 days. Take a next question. Name the company which has launched an initiative named Pragati to drive women entrepreneurship and to spread awareness and adoption of technology among women in India. WhatsApp, Microsoft, Google, Twitter या Facebook. Answer is Facebook. The Pragati initiative of Facebook will incubate and accelerate early stage women lead non-profit that are working to drive women entrepreneurship and to spread awareness and adoption of technology among women in India. Take a next question. Name the bank which has launched safety grid campaign for social distancing. HDFC Bank, UCO Bank, Syndicate Bank, ICICI Bank, Axis Bank. Answer is HDFC Bank. The Housing Development Finance Corporation, SDFC का full form है Housing Development Finance Corporation Bank, has launched safety grid campaign which was conceptualized by Leo Burnt India to help people maintain social distancing as prescribed by the World Health Organization WHO जिसे कहते हैं, while waiting at shops during lockdown. Take a next question. What is the percentage decline in exports amounting to $314.31 billion in financial year 2019-20 in India as per data of Commerce and Industry Ministry? 4.78% to 21.45%, 19.78%, 10.85%, 7.19%. Answer is, and the right answer is 4.78%. In accordance with the figures released by the Ministry of Commerce and Industry, Indian exports of goods decreased by 4.57% to $21.41 billion due to COVID-19 spread, which has interrupted the production and supply chains. With this, the overall export of financial year 1920 declined by 4.78% to $314.31 billion. Take a next question. As per International Monetary Fund's IMF latest report, name the countries
which will have positive growth rate 2020? China, India, Japan. तो right answer is the China and India. International Monetary Funds in its latest report has placed India and China as the fastest growing emerging economics of the world with a positive growth rate in 2020. Next question. Thomas Ajan has resigned from the post of President of International Weightlifting Federation, IWF, International Weightlifting Federation. Where is the headquarters of IWF located? Vienna, Australia, Budapest, Hungary, Lausanne, Switzerland, London, UK, New York, US. तो बुडापेस्ट में है. International Weightlifting Federation President Thomas Ajan, 81 years old, resigned in the wake of allegations of corruption and doping violence. The IWF Executive Board accepted the resignation of the IWF President. तो Budapest. Take a next question. Name the person who has been appointed as the MD and CEO of credit rating agency Care Ratings, headquarter Mumbai, Ajay Mahajan. Credit Analysis and Research Limited appointed Ajay Mahajan as Managing Director and Chief Executive Officer of the company for 5 years commencing from 15 April 2020. He was the successor of T.N. Kumar, interim CEO of the company. Take a next question. Vineet Arora has been appointed as the MD and CEO of which insurance company? Aegon Life Insurance Company, Bajaj Allianz General Insurance Company, Bharti AXA General Insurance Company Limited, Paytm General Insurance Limited, Reliance General Insurance Company Limited. Right answer is the Paytm General Insurance Limited. Paytm, a major digital payment system and financial service platform, appoints Vineet Arora as the Managing Director and CEO, Chief Executive Officer of Paytm General Insurance Limited. Take a next question. Indian Council of Medical Research, ICMR, has found coronavirus in which animal species? Rat, bat, lion, dolphin, elephant. It's very obvious and very top of the year question, and the right answer is bat. Obviously all of you know about COVID-19. So that is BAT. The Indian Council of Medical Research, in a first of its study in collaboration with a team of scientists from the National Institute of Virology, Pune, NIV, have found out bat coronavirus from 25 bats in 2 Indian bat species, namely Petropus, Indian flying fox के नाम से भी जानते हैं, Indian flying fox, and Raustes, old world fruit bats. तो ये बैट्स की वजह से कोविड-19 होता है. ये 10 क्वेश्चन जो बहुत ही लेटेस्ट थे. 17 अप्रैल की करंट अफेयर जो कि आपको 18 अप्रैल मॉर्निंग मिल जाएगी, जो कि ताज़ा खबर होगी, जैसे कि आप अखबारों में भी पढ़ते हैं वैसे ही आपको ये 10 के क्वेश्चंस मिलेंगे करंट अफेयर के, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले हो सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं. 7 से 8-9 मिनट का ये वीडियो देखने में फ्रेंड्स आपको टाइम नहीं लगेगा. सो प्लीज़ ध्यान रखिए, देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए. Thanks for watching my video. Stay connected with my channel. Get ready for next exam. Keep learning. Please like, share and subscribe करना मत भूलिएगा. Thank you.